जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरिमोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि हमारी जो स्टडी ऐप है, स्टडी टेबल, वो लॉन्च हो चुकी है। आप चाहें तो उसे डाउनलोड करके बहुत सारे टेस्ट जो कि काफी कम अमाउंट में है अवेल कर सकते हैं। लेकिन खैर, हमारा जो ऑब्जेक्टिव आज का है वो है सुप्रीम कोर्ट वर्सेस जो हमारी गवर्नमेंट है वो। क्या लगातार, क्या पहली बार ऐसा है कि मोदी सरकार वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ही नजर आ रहा है, या पहले दिन से जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब से कहीं ना कोई विवाद इन दोनों से जुड़ा हुआ आपस में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि अगर आप उठाकर देखेंगे तो पहले जैसे ही संविधान लागू हुआ तो चंपाकम दोराई राजन केस आया और उसके फैसले को पलटते हुए जो हमारे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वहां पर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया। उसके बाद अगर आप देखें तो बड़ा और बहुत बड़ा केस केशवानंद भारती केस आता है। उसके बाद हाई कोर्ट के मामले में भी, अगर हाई कोर्ट के केस में भी देखा जाए तो हाई कोर्ट जो है वो इंदिरा गांधी के मामले के अंदर जिस तरीके से राजनारायण केस को अगर आप देखेंगे तो पता लगेगा यहां गवर्नमेंट वर्सेस हाई कोर्ट नजर आ रहा है। उसके बाद चाहे आप शाहबानो केस को देखें, चाहे आप दिल्ली सर्विसेज एक्ट को देखें, चाहे आप और भी दूसरे मामलों में बहुत सारे ऐसे केसेस है जहां पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई डिसीजन दे रहा है और गवर्नमेंट उस डिसीजन को कई मामलों में तो पलट के एक नया लॉ बना देती है। मैं आज इसी मामले पर, मैं बहुत दिन से इस मामले में डिस्कशन करना चाह रहा था, लेकिन समय की बाध्यताएं कभी मेरी कभी पीयूष जी की इस तरीके से रही कि हम आपके साथ ये मामला डिस्कस नहीं कर पाए। तो सबसे पहले मैं आज इस वीडियो में स्वागत करना चाहूंगा पीयूष भारद्वाज जी का, जो सुप्रीम कोर्ट में एक जाने माने अधिवक्ता है, बहुत अच्छे लेवल की प्रैक्टिस और सब चीजें। ये आज कॉन्स्टिट्यूशन के इस मैटर में हमारे को बहुत मतलब एनलाइटन करेंगे कि असलियत में मामला क्या है। सर, ये कॉलेजियम सिस्टम या गवर्नमेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, छोड़ दीजिए कॉलेजियम सिस्टम या छोड़ दीजिए गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशरी, पहली बात ये है क्या और क्यों है? यहां से अगर शुरू करें तो सर, ओवर टू यू। देखिए, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है और रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि मॉडर्न इंडिया की जब हम बात करते हैं तो उसकी आधारशिला की आप बात कर रहे हैं। Both the cases that you mentioned, Indira Gandhi versus Raj Narayan, it's the very classic case जिसमें आम जनमानस इसको इमरजेंसी के नाम से जानती है। A proposal was given by the government कि in the times of emergency, even the fundamental rights can be waived off, considering election was challenged, or it was in that very bold case which has become the very important constitutional case। बहुत important संवैधानिक मुद्दों में से आज की तारीख के अंदर ये गिनती होती है इस मामले की। तो वो इलेक्शन शट डाउन किया गया था एंड फॉर द फर्स्ट टाइम you could see a judge of a constitutional court, was Justice Khanna at that point of time in Allahabad court, went against the central government to an extent that it was actually Justice High Court versus, in a way, Prime Minister। और उसके फलस्वरूप आपको इमरजेंसी देखने को मिली। बहरहाल उसका रिजल्ट ये हुआ हमारे को कि जस्टिस खन्ना, ऑल्दो बीइंग वेरी मेरिटोरियस एंड द ब्रेव पर्सन और द फिगर दैट ही was never succeeded to Supreme Court as he should have been promoted, or the junior judges, 3 or 4 junior judges jumping over the queue were elevated to the honorable apex court, Supreme Court, और Justice Khanna का elevation नहीं हुआ था and he retired as a Justice High Court, Allahabad। So it is for the first time at that point कि a question mark regarding the transparency came कि हमारे संवैधानिक कोर्ट जो हैं, जो संविधान के मूल अधिकारों की रक्षा करने वाले संरक्षक हैं, उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा। और देखने वाली बात इसके अंदर ये भी है कि collegium, the word in itself finds no place, either in any expression in the constitution, ना तो हमारे संविधान में है, ना कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ना कोई कानून है। और दिस इज समथिंग दैट हैज बीन एन्यूमरेटेड
as a practice by the very Supreme Court, the Honorable Supreme Court. और बहुत क्लासिक एक्सप्रेशन इसके लिए यूज किया जाता है, इवन इन लीगल कॉमन सेंस और लीगल पार्लेंस, हम इसको जानते हैं द जजेस केसेस के नाम से. And when we talk about the judges cases, the first is very celebrated case of SP Gupta versus Union of India in 1981. So this was a 3-judge bench, which decided that the executive must have the say in the appointment of the judges. So this was one finding in that case. Second one was very interesting in 1993. This was between Supreme Court Advocate on Record Association versus Union of India. So the finding in this case was कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनकी से होनी चाहिए in appointment of judges. And later on it came to an extent that we had a beautiful piece of legislation by the name of NGAC, National Judicial Appointment Commission, जो कि सरकार, केंद्र सरकार जो है वो प्रॉपर कोडिफाइड मैनर में एक कानून लेके आई थी कि अपॉइंटमेंट जजेस का होगा कैसे. अब पहले तो हमें अपॉइंटमेंट के दायरे में ही समझना चाहिए कि हाउ डज कोलिजियम वर्क्स. तो जब आप कोलिजियम की बात करते हैं तो एट द लेवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, व्हिच इज द हाईएस्ट डिसाइडिंग अथॉरिटी, it is headed by the Honorable Chief Justice and 4 most senior most judges of the Supreme Court. So this is a committee essentially comprising of 5 people in total, and which is headed by, of course, the Chief Justice of India. And the remaining 4 members of the commission are the most senior most judges of the Honorable Supreme Court. So the functions of collegium is to first of all make recommendations for transfers amongst either appointment to High Court as judges. There is a collegium in High Court also, which is by the one retired justice of High Court plus 2 senior most member, and then on their recommendation, the recommendation is sent to the Supreme Court. So हाई कोर्ट के स्तर पे अपॉइंटमेंट 2 स्तर पे होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट रिक्वायर्स अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज, सेकंड रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ अ जज. सो एक न्यायमूर्ति को जब हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट होती है तो दैट इज डिसाइडेड बाय द कोलिजियम, और जब उनका प्रमोशन होता है एज अ परमानेंट जज, एज अ चीफ जस्टिस ऑन द सेम कोर्ट, और द ट्रांसफर्स अक्रॉस ऑल द हाई कोर्ट्स इन इंडिया, दैट इज वन फंक्शन ऑफ the collegium. The second most important function of the collegium is elevation of the judges of High Court as judges to Supreme Court. So these are 2 principally, मतलब अगर साधारण और मूल भाषा में समझा जाए तो collegium इन 2 पैरामीटर्स पे ऑपरेट करती है. Now the second question will of course come, how does it function? So there are 2 ways to it. First of all, the collegium can make recommendations to the government that, see, we have found these candidates as fit to be appointed as a judge to a High Court or to Supreme Court. And the central government has, in a way, a very limited but very important role to, in a way, in simple words, to conduct a due diligence, which is what? जो एक बैकग्राउंड चेक होता है, जैसे डिफेंस सर्विसेज के अंदर होता है कि व्हाट इज योर बिलोंगिंग. ऑफ कोर्स इट कैन नॉट बी अ फॉरेन नेशनल. देयर आर मेनी अदर पैरामीटर्स आल्सो बिकॉज़ देयर आर सेफ्टी कंसर्न्स. बिकॉज़ अपॉइंटमेंट ऑफ जज किन पैरामीटर्स पे होगा, दैट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. एलिजिबिलिटीज क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, उनके बेसिक फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, दैट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. But we are limiting ourselves only to the appointment of those judges. So उनका एक पूरा background check होता है, which will require that if they were lawyers, they started as lawyers, so उनका background in terms of practice क्या था, what are the political inclinations, is there any sort of criminal background, is there any cases pending against them, are these people people of highest moral integrity.
Or there is also, reports of RAW and IB, which is in a way a confidential report briefing the government that appointment of any such person will not go against the integrity of India. तो गवर्नमेंट का बड़ा लिमिटेड रोल होता है, और गवर्नमेंट ओनली ऑन दीज पैरामीटर्स कैन रिजेक्ट एन अपॉइंटमेंट. आपने बहुत बार सुना होगा कि केंद्र सरकार के अंदर गए हुए नाम सरकार ने खारिज किए. ये एक केस मुझे याद आ रहा है, जब प्रणब मुखर्जी जी ने शायद जस्टिस अल्तमस कबीर थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, शायद कि उनके 5 रिकमेंडेड नामों में से वापस कर दिए और कहा दोबारा रिकंसिडर कीजिए. मामला हालांकि दब गया था, उस टाइम हम यूपीएससी प्रिपरेशन वगैरह कर रहे थे तो इन चीजों पर ध्यान रखते थे. तो उसमें कहीं ना कहीं वो एक जो रिकमेंडेशन थी वो पॉसिबली उनके किसी रिलेटिव वगैरह की थी या किसकी थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन कुछ ऐसा था. मैं इस चीज को याद करता हूं सर. There was a very celebrated article, and from an academic point of view, I believe this is very important to mention. और जनमानस के तौर पे भी, being a citizen of India, I mean, this is also very important that there was a survey conducted, and it was found that all the office bearers of the constitutional courts were coming out of from roughly 265 families. I'm not very sure it was 260 or what was the exact figure, but all in all it was 265 families. So all the appointments made from the time of independence till date was found to be only from 265 families, as per that article. And a very big stir came up in the public domain कि काबिलियत क्या एक सेलेक्टेड वर्ग में ही देखने को मिलती है, या मेरिट बेसिस पे, या जब हम एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट सिस्टम की बात करते हैं, और उस ट्रांसपेरेंट सिस्टम को डिफाइन करने वाला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर उसके कस्टोडियंस की ही अपॉइंटमेंट ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, देन हाउ कैन यू क्लेम आवर सिस्टम टू बी ट्रांसपेरेंट? So I believe from the very instance हम जब इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस की बात करते हैं, और उसमें जो ब्लेटेंट मिसयूज था, जो कि पब्लिक डोमेन में पहली बार देखने को आया, because generally the functioning of the collegium in itself is a very behind the doors confidential process. This is not something that will come out in public domain. लेकिन पहली बार उस मुकदमे में, उस केस के अंदर लोगों को ये पता लगा कि जंपिंग ऑफ क्यूज जैसी पोजीशन भी आ रही है, एंड somebody is actually being punished for doing the right thing. Somebody was being punished for actually protecting the fundamental rights of the people, which is the very spirit of our constitution. Yes. तो ये कहीं ना कहीं टॉपिक जो है पब्लिक डोमेन में पहली बार मेजरली हाईलाइट उसी केस में हुआ. और फिर जैसा कि आपने सही बताया, दिस इज एवरी ईयर और 6 months that we will come across an article in newspaper, then certain recommendations are made by the collegium, and then that is not being accepted by the center. हालांकि हरिमोहन जी, इसमें there is one very important factor to know, and being the procedural part of it, if center rejects a name on the basis of liking, and it is reverted back to the Honorable Supreme Court that you please reconsider, and even then if the Supreme Court collegium thinks that that name is fit और वो दोबारा recommend करते हैं, then technically the government has no option but to appoint. लेकिन कहते हैं there is always an exception. And now I believe in the present times where India is being seen as the torchbearer of free speech, I believe even I should not shy away from one very particular case that came in public domain of one very noted lawyer of Supreme Court, Mr. Kripal, जिनकी appointment collegium ने has on multiple occasions इनको recommend किया है as Justice High Court for appointment. And it was very, with all the force, it was opposed by the government on 2 parameters.
and I'm talking about before the the very landmark judgment of 377, that that person, that recommended candidate was homosexual, in his sexual approach. And second of all, that partner that concerned lawyer had was of a German nationality. Okay. So although that constitution has now allowed homosexual relationships, they have also in a way decriminalized it. So this cannot stand in the way of appointment in general light. But considering the partner was of a foreign nationality, a German nationality, on that basis, time and again, the government has rejected the proposal, which has been made on multiple occasions. तो मैंने अभी आपसे जो ये डिस्कशन करा कि although center can only refuse it once, and if the same name is given to center again on recommendation of the collegium, the center has no option but to appoint. उस केस में the government as a tactic only uses one very classic way of delaying the appointment. So you would hear till the time the collegium was reconstituted, that appointment was delayed. तो इस पे भी हमने बहुत सारे आर्टिकल्स टाइम एंड अगेन हम न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं that Supreme Court is not very happy with the time the center takes for the recommended name. Although the names have been recommended, the background check has come as clear. There is no problem, because there is an apprehension that the government might not be happy with the candidate. The appointments are not being made in time, waiting for another collegium to come into picture. And considering, since there are no set parameters, then again the fresh collegium or the change in collegium, any member that changes, or the CGI becomes incumbent with the appointment of a new CGI, there would be fresh recommendations. तो एक बात तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और इसमें कहीं से कहीं तक कोई शक नहीं है कि ये प्रोसेस इज नॉट ट्रांसपेरेंट. And it is very important that when this NGAC was struck down, our then presiding Chief Justice of Supreme Court, Justice U. Lalit, made a remark, who is considered as a beacon of free speech, that please don't interfere with the collegium system. And this was a very surprising statement on his part. He said it's a perfect system. And then went on to say, till the time you choose to bring NGAC back. तो आपको ये समझना होगा कि जैसे हमारे स्टेट में अपॉइंटमेंट्स होते हैं through a proper written examination in all the district courts that we see, on junior level is also one examination conducted by the High Court of that state, and the senior judges, the session judges, and the principal judges, उनके HJS के एग्जाम होते हैं, हायर जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम. And this is the same parameter as you would see in UPSC. There is going to be a minimum requirement. A candidate will have to satisfy all those minimum requirements. उसमें ऐसी requirements भी हैं जो आपको ineligible बना देती हैं if you have surpassed a certain age, or if you are coming from a questionable character or criminal background. And once you become eligible, it is a 3-stage appointment, which is first would be a preliminary exam. Then there would obviously be a shortlisting of the candidates, which would be then promoted to the mains examination. And then the very selected candidates will face the interview, and then on the consolidated marking with the usage of the quota system, then they will come into appointment, as appointed candidates, the judges that we see. But on the other part, the very High Court, who is recommending the process of doing this with a 3-tier exam system, is itself being appointed through a system which is neither transparent nor public, nor it is amenable to RTI. You cannot put up an RTI seeking why X judge was appointed and why was rejected. So when we talk about being the biggest democracy,
we cannot parallelly have a system which is not only not transparent but in a way secretive. And that process will affect every citizen of India. इससे भारत का हर नागरिक प्रभावित है, क्योंकि न्याय प्रणाली कैसे चलेगी और उन्हें कौन चलाएगा ये आप और मेरे सबके लिए रेलेवेंट है. We are in a time where judicial activism is to an extent कि साबरीमला मंदिर के अंदर कौन घुसेगा कौन नहीं घुसेगा, मंदिर की संपत्तियां एमिनेबल टू टैक्स होंगी नहीं होंगी, सैक्रिफाइस स्लॉटर ऑफ एनिमल्स जो है वो किस सर्टेन सेक्ट का रिलीजियस फ्रीडम में माना जाएगा किस में नहीं माना जाएगा, जो सोशल सेंटिमेंट्स के बहुत फंडामेंटल टॉपिक्स को डिसाइड कर देते हैं through writ jurisdiction or through PILs. So people should have and they should repose the faith in all those selected candidates who are presiding as, you know, the honorable justices of any High Court or Supreme Court. So I believe, in my personal opinion, even the time was ripe from a very from a very long time, and the central government made an effort through NGAC, which again, became, as you started by saying, Supreme Court versus the government, was struck down as unconstitutional. And again, when the debate comes up, एक चीज आपसे पूछने भाई साहब, ये जो NGAC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता के स्ट्रक डाउन कर दिया, ठीक है, उसके ऊपर किसने आवाज भी नहीं उठाई. बस एक अरुण जेटली जी का शायद बयान आया था कि सुप्रीम कोर्ट को या जुडिशरी को अपनी हद में रहना चाहिए, या एक दो छोटी मोटी बात आई, लेकिन पब्लिक डोमेन में डिस्कशन नहीं हुआ और वो उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया. सर, आपको ये चीज समझनी होगी कि हमारी जुडिशियल कॉन्शियंस और पॉलिटिकल सेंटिमेंट कभी भी मिलता नहीं है. द कोर्ट विल ऑलवेज गो इनटू एन एक्सटेंट ऑफ सेइंग वी विल डू व्हाट इज राइट. We will not go by the majoritarian opinion, which in my personal view should not be the a very hard scale to follow, because just because an opinion is majoritarian, you cannot presume it to be wrong. Majoritarian opinion is not wrong. The appointment of the government happens because there is a majoritarian view of selecting a government, of bringing a government into power. Today we have an independent nation because majoritarian people thought at that point of time that enough was enough, and we should now have our name and country and sovereignty and republic and democracy, everything back. We will be governed by our own people. So it should not be a rule in a way कि majoritarian view means you have to oppose the majoritarian view. And a very convenient argument is always taken that although our constitution says that there is separation of powers, and which is there for all the right reasons, आप उन कंट्रीज को देख लें या नेबरिंग कंट्रीज को देख लें जहां पर इस प्रिंसिपल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता, जहां पर जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के फंक्शंस ओवरलैप होते हैं, तो वहां सिस्टम का कोलैप्स होना एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एक प्रैक्टिकल रियलिटी हो जाता है. So only with one aspiration or with one, such input, the Supreme Courts or the apex court finds that if the appointment of the judges would be made by the government, the government would always appoint somebody who is favoring to them. And therefore it would breach the very foundational principle of separation of powers. And this input cannot be actually ruled out. आप इसको एक तरफ नहीं रख सकते, ये एक बहुत वैलिड कंसर्न है. कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट अगर अपने जजेस को प्लेस करे तो हाउ कैन यू से, क्योंकि सरकार से सताया हुआ बंदा कोर्ट ही जाता है. जब कहीं कोई उम्मीद नहीं है तो आखिरी उम्मीद न्यायपालिका से ही है. और अगर न्यायपालिका ही कठपुतली सरकार की बन जाए तो आप समझ सकते हैं वो किसी भी स्टेट के लिए या किसी भी राष्ट्र के लिए हेल्दी नहीं हो सकता. लेकिन दूसरे ही पैरामीटर पे आपको ये भी देखना होगा कि ये जजेस की अपॉइंटमेंट सेलेक्टिव होना
हम सिर्फ कोलिजियम को अपोज नहीं कर रहे, हम गवर्नमेंट को भी कहते हैं we do not want that the government should be in a position to just randomly pick candidates, and it should be done through a merit based system. Let the best candidate come forward, and since somebody is coming from a neutral background, and as I started in that article that I was discussing, I am very sure कि भारत में 265 परिवार से तो ज्यादा ही रहते हैं. So anyone who will come out from a neutral background, I believe the confidence of the masses would be much more of a pristine value in that candidate. जो समाज से चुन के मेरिट बेस्ड सिस्टम से आता है, समाज का उस पर ज्यादा विश्वास होता है. But I believe rather than coming to a regional, or a very logical conclusion, this always ends up as, will the Supreme Court have a say or the central government will have a say? And we have to understand that the judges will come and go. The governments will come and go. Certain thought processes will come and go. But at the end of the day, we as a country, Bharat, will need a system that is transparent and efficient. And why do I say this? Being a practicing lawyer, there are reports of law commissions which says, cumulatively there are 4 crore cases pending. Yes. Abhi, there was this article in this local paper that after fighting for 35 years in the court, the case came out to be as non-maintainable. So an issue which in other countries, better countries, in terms of judicial transparency, maintainability or non-maintainability is something that would be decided in the matter of weeks and months. But we are becoming a victim of such a system, where first of all the very cardinal principle, हमारे न्याय का एक बहुत मूल सिद्धांत है कि justice delayed is justice denied. अगर न्याय देर से मिले तो वो न्याय ना मिलने के बराबर है. Exactly. और हम उस कंट्री में बात कर रहे हैं जो हर साल लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स आती है और हम एक हेल्पलेस मासेस की तरह सिर्फ पढ़ते हैं कि वो पेंडिंग केस करोड़ से 1.5 करोड़ हो गए हैं, 2 हो गए हैं, 2.5 हो गए हैं, 3 हो गए हैं, 4 हो गए हैं. दिस नंबर इज एक्चुअली increasing. And I will not say that there have been good steps, that legal aid has been one good step. Lok adalats has been another good step. जो छोटे-छोटे मसले होते थे जो अब संडे सैटरडे कोर्ट्स में आप आके एमिकेबली सेटल कर सकते हैं. लेकिन आपको फिर भी ये समझना होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, देयर ऑफिशियल टाइमिंग्स ऑफ असेंबलिंग इन द कोर्ट इज 10:30 to 4, including the lunch breaks. And I'll tell you, the situation in tribunals is so horrible that you will find the presiding officers assembling at the time of 12:30. और आप कहते हैं कि एक याचक हेल्पलेस हो जाता है न्याय व्यवस्था के सामने, पर हम रोजमर्रा के बेसिस पे वकीलों को हेल्पलेस होते देखते हैं कि उनका मैटर कॉल ही नहीं होता. तो इसका मतलब एक ट्राइब्यूनल के अंदर तो जिस तरीके से केस गया है, उसका तो मतलब ये पुरानी टाइम के जमींदार नहीं होते जो मतलब अपना रात सुबह देर से उठे, खाया पिया, घूमे फिरे, वॉक वगैरह करी, उसके बाद आराम से हरिमोहन जी, जनता दरबार में जाते. आपने जिस मुद्दे पे इस डिस्कशन को शुरू किया है, ये मुद्दा इतना गहन है कि ट्राइब्यूनल की अपॉइंटमेंट कोलिजियम की अपॉइंटमेंट का एग्रेवेटेड फॉर्म है. Okay. Because the chairperson of a tribunal of a national level, let us say national company law tribunal, or national company law appellate tribunal, or let us say TDSAT, telecoms dispute settlement, or let us say consumer forums, national consumer forums, or let us say जो रेलवे से रिलेटेड हमारे ट्रिब्यूनल्स हैं. So it is comprising of, the judges comprising of those courts are one judicial member who is one retired member, again recommended by the Supreme Court on a pick and choose basis, in a way.
because out of 100 or 200 or 300 or 400 retired judges, they will choose one random judge, which people will have no answer to, that why those other 299 were disqualified. And the other members sitting with the judicial member are the technical members. So in a way, we talk about company law. हमारी पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री, हमारी पूरा कंट्री के फाइनेंसेस कंपनीज पे चलते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड दैट. और उनके भी जो लीड सिटिंग मेंबर्स हैं, दे आर अपॉइंटेड ऑन अ पिक एंड चूज बेसिस. एंड यू हैव राइटली सेड, I mean, you were a little liberal with the choice of words कि आओ बैठो खाओ पियो घूमो और जाओ. And I will, in my practical experience, I would say that me being a lawyer, if I cannot tell my client that if the court had to assemble at 10, why is he not sitting till 12:30? Why after sitting of only 40 minutes, the court has gone into lunch? Why the lunch was till 2 and now it was being continued till 2:30? And then out of a random proposition would come, a training is pending, somebody's elevation party is pending, an official function is pending, and they had to attend that. So now the matters will not be taken up. And something that was urgent today will now be heard after 6 months. So the situation becomes even graver when you come to tribunals. And please take my word for it. I am not talking about, some random state in India. I am talking about the very capital of India. मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ. बाहर तो पता ही नहीं क्या होगा. बाहर तो we don't even know. I mean, जो sideline states हैं, वहां तो मुझे लगता है कि एक जो बहुत लंबे टाइम से एक सिनेमैटिक वे में हम एक एक्सप्रेशन देखते हैं कि क्या कानून अंधा होता है. और मेरी समझ में कानून अंधा तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चल रहा है वो बूढ़ा जरूर प्रतीत होता है. It's not able to discharge its duties to an extent that is required. It is not able to discharge its duties to an extent that is expected. It is not able to discharge its duties to the extent that is required in the present times. I mean, in my personal opinion, a private company employee works on the official hours from 9 to 5. And that is a one random salaried employee. अगर आप सरकारी बाबू की भी बात करें तो उनकी भी जॉब जो है या ऑफिस टाइमिंग्स जो है वो 9 से 5, 9 से 6 बहुत रेगुलर है. And I don't understand that why a court would, which is actually overburdened with a lot of work, will sit at 10:30 official timing, which is always 15 to 20 minutes late, and I am being very casual with 15-20 minutes. As I told you in tribunal, so it is 1.5, 2 hours late. And they will get up at 3:30, lunch including. तो I believe सबसे पहले तो हमें अपने judicial operational timings पे काम करना चाहिए. There was also a parallel debate that although the sanctioned limit of judges is already 1/3 or 1/4 less to the required parameter of today, that appointment still was kept vacant for years to come. कई high courts ऐसे थे जो 40% strength पे काम कर रहे थे. And the reason that used to come was so horrible in a modern India that we do not have courtrooms to accommodate. We do not have the necessary infrastructure. We do not have the staff members. And I'll tell you, do you think for a government it is a big task? Is it tough for the government with the state exchequer fund to bring up as big a building possible? Is it difficult for the government to appoint as many employees? When we say, सरकारी नौकरी के लिए तो requirement हमारे देश में कभी खत्म ही नहीं होती. And then on the same tussle कि the government wants to,
appoint one judge, the Supreme Court wants to appoint another judge, and both are not agreeing to each other's version. So let the seats be empty. When the time will come, right, we will appoint. So this is a travesty of the very social fabric. अगर हमें सही मायने में स्वतंत्र होना है, अगर हमारे राष्ट्र को सही मायने में गणतंत्र होना है, अगर हम अपने समाज को संवैधानिक मूल्यों पर चलने वाला समाज मानते हैं, तो ना सिर्फ हमें अपनी न्याय प्रणाली एफिशिएंट चाहिए, केपेबल चाहिए, इफेक्टिव चाहिए और टाइम बाउंड मैनर में ऑपरेट करने वाली चाहिए. And I am sorry to say that although this government has made a tremendous effort to at least fulfill the posts that were lying vacant, we are still running, a lot lower below the expected requirement. And I believe that if you want to take the new India forward, there has to come a time where Supreme Court and the government has to come onto a consensus, saying that today we are agreeing on a transparent mechanism whereby this whole judicial system will become more effective and efficient. And till the time that happens, I believe हम हर 2 महीने या 3 महीने में ऐसी खबरें आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर में पढ़ते आए हैं और पढ़ते रहेंगे. एक्चुअली भाई साहब, इस चीज के अंदर जो आपसे बात हुई ना, इसमें एक बड़ा कमेंट आया, हालांकि मैं इससे एग्री नहीं कर रहा, लेकिन ये एक ओपिनियन बिल्डअप होता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं. इंडियन सुप्रीम कोर्ट इज यूजलेस. ये जो वर्ड है ना, हालांकि मैं इससे एग्री बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि देखिए थोड़ा सा तो पढ़ा हमने भी है कि यार जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसमें जुडिशरी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. लेकिन एक पब्लिक डोमेन के अंदर तो ये मामला चला जाता है, क्योंकि असलियत में कई मामलों में, जैसे आपने एक बात बताया कि बहुत ज्यादा रेशनल भी हो जाते हैं एक तरीके से, बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं कि एक मेजोरिटेरियन की जगह कुछ ज्यादा ही वो हो जाते हैं कि हमारे को अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड बाय वर्ड एंड ऑल वो सब देखना पड़ेगा. शबरीमाला केस के मामले में हमने काफी हद तक इस चीज को देखा भी है थोड़ा सा. लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं अभी खड़े 2 मिनट सोच रहा था, तो मेरे को एक चीज याद आई. ब्रिटिशर्स ने इंडिया में जुडिशियल सिस्टम जो लागू किया, उसमें सबसे इफेक्टिव जुडिशियल सिस्टम भाई साहब वो था जो कि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने उस सिस्टम को लागू किया जिसके अंदर कंपनीज के मामले में जो इकोनॉमिक मैटर्स थे उनको डील किया जा सके, और उनको डील करने के लिए अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से लेकर सब चीजें सबसे ज्यादा थी, क्योंकि उनका मेन टारगेट बिजनेस था. और जो दूसरे कोर्ट्स थे वो सब्सिडियरी फॉर्म में ऐसे थे कि ठीक है वो चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, वहां एक रिजर्व फॉर्म में जज होगा जो बाकी मामलों को प्रायोरिटी बेस पर सुनेगा, और ठीक है बाकी जो आम जनता के मामले थे वो चलते रहेंगे. क्या ऐसा कुछ दिखाई आपको दे रहा है कि गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है जुडिशरी के अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसे इस तरफ ज्यादा फोकस कर रही है कि इकोनॉमिक मैटर और इन सबको ज्यादा सुलझाया जाए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है और सब चीजें, तो कहीं ना कहीं कुछ ये सपोर्ट, क्योंकि आम आदमी के लिए तो वो सर्विसेज जल्दी से होंगी नहीं जब तक पैसा नहीं होगा. जहां से पैसा मिल रहा होगा और एफडीआई का केस होगा वहां, क्या ऐसा कुछ है? हरिमोहन जी, I'll come back again to the object we were discussing earlier. That Constitution recognizes separation of powers in a way identifying them as 3 essential foundations of a working society. And when I say 3 essential foundations, तो सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि अगर उसमें एक भी फाउंडेशन खराब होगी या बिगड़ेगी तो पूरे समाज की कार्य प्रणाली पे फर्क आ जाएगा. तो आपका जो क्वेश्चन है कि कंपनीज के काम को एफिशिएंट करना, या डिफेंस रिलेटेड मामलों को एफिशिएंट करना, या कंज्यूमर रिलेटेड मामलों को एफिशिएंट करना, या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लेके एफिशिएंट करना, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टी केसेस, a lot is coming up nowadays. Considering people don't shy away from litigating today. Earlier there was a time where anyone who was going to court was considered something was wrong with that person, या कोई उन्होंने कुछ बुरा किया होगा तो they have ended up in court.
But today we are operating in such a global world where disputes are pretty much normal between, an everyday vendor or a buyer or a consumer or an entrepreneur, and this is a day-to-day affair. And considering such kind of arrangement will require a lot of inputs, a lot of cases being filed on the daily basis. And on such note, I must tell you that the biggest litigant in the country, can you guess who's the biggest litigant in the country? The biggest litigant in the country is Government of India. है उसको भी जरूरत है. But the biggest litigant in the country is the Government of India. भारत सरकार सबसे ज्यादा मुकदमे डालती है, भारत सरकार सबसे ज्यादा मुकदमे लड़ती है, भारत सरकार के सबसे ज्यादा मुकदमे कोर्टों के सामने पेंडिंग है. From tender to writ petitions to criminal appeals to constitutional matters to railway to armed forces to company to telecoms, armed forces, what not. Government is very okay with challenging everything and putting it up before the court. So there is a situation where the government has become the biggest litigant in the country, and I was not shocked by your reaction, because for any commoner this fact to come out is a very surprising fact. और इस केस में भी अगर हम सिस्टम को एफिशिएंट नहीं बनाएंगे तो सिस्टम ना सिर्फ लैग करेगा, आप हमारी नेबरिंग कंट्री में देख सकते हैं कि वो लैग होने से शुरू होते होते क्रिपल हो गया. Although I will now continue to the comment that you just mentioned, that somebody mentioned that the Supreme Court is useless. And I'll tell you, the air that you are breathing in this country is made possible because to check the powers of the government, the Supreme Court is there. Yes. You are able to. इसमें भी है ना, इसमें भी लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पटाखे बंद कर दिए. देखिए, मैंने आपसे कहा हरिमोहन जी कि पब्लिक सेंटिमेंट और जुडिशियल जो एक डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज है या जो प्रोसेस है, that can never come into a certain line. And as I said, that Supreme Court many a times have said, even in this observation, patake wale cases may be, that we will not go by the majority opinion. We will go by the opinion and the requirement that is enumerated in the constitution. जो संविधान सही मानेगा हम उसको मानेंगे, लोग सही माने ना माने, इसीलिए हम कस्टोडियन हैं. हालांकि लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं इसलिए भी कई बार डगमगा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ये लिबर्टी है, ये पावर सेलेक्टिवली यूज क्यों करती है. एग्जैक्टली. ये भी मेरा सिर्फ कुछ ही त्योहार ऐसे क्यों हैं जो कि बीकन और पैरामीटर्स ऑफ सेफ्टी बन जाते हैं. कुछ बाकी त्योहार ऐसे क्यों नहीं हैं जिनमें ब्लेटेंट रॉन्ग होता है, कानून की ऑलमोस्ट हर पैरामीटर का उल्लंघन किया जाता है, एंड देन सुप्रीम कोर्ट चूजेस टू पुट अ ब्लाइंड आई. एंड इवन इफ समबडी विल कम आउट इन अ PIL, then very conveniently the Supreme Court chooses to say, we do not want to entertain motivated PILs. उन पे फाइन लगा दिया जाता है, उन पे कॉस्ट लगा दी जाती है. So I can understand the public sentiment because you and I come from society. Yes. You and I come from a family system. You and I come from a faith system. You and I are believers of something. So we would want Supreme Court to use the same yardstick. Yes. हालांकि एक आम भाषा में कहा जाता है कि गधे घोड़े एक डंडे से नहीं हाके जाते, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के दायरे में ये कहना चाहता हूं कि अगर समाज के किसी वर्ग को घोड़ा और किसी को गधा माना भी जाए तो भी सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस डिलीवरी का जो सिस्टम है वो सेम पैरामीटर्स पे ही होना चाहिए. Exactly. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज ओनली द सुप्रीम कोर्ट जिसको हम निष्पक्ष कह सकते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट की इवन साइलेंस मीन्स अ लॉट. Yes. सुप्रीम कोर्ट का किसी चीज पे चुप रहना भी बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलना है. पब्लिक सेंटिमेंट.
And at the end of the day, the courts were established so that justice could be ensured for the masses. So it has to be also observed that Supreme Court today cannot act as a majesty. Supreme Court is an extension, a body, a principal institution of our society, which is there to preserve the institution. तो जिसे हम अफलातूनी फरमान बोल देते थे या मुगलिया फरमान बोल देते थे कि लोगों को सही लगे ना लगे लेकिन जजिया लिया जाएगा, बिल्कुल एक ये अप्रोच किसी भी कोर्ट से एक्सपेक्टेड नहीं है. And in recent times, I would like to say that Supreme Court through PILs has settled matters of such wide arena कि मुझे लगता है समाज के बहुत सारे वर्ग चाहे एक दूसरे से एग्री करें या ना करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबके अधिकारों का ध्यान रखा है. हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता है. और जब तक सुप्रीम कोर्ट हमारा कस्टोडियन है हमारी सोसाइटी का, you and I can with confidence say that the government cannot turn to be a dictatorship or a government, without a voice of the people. Because the powers of the government will always be checked by the court. But on the other hand, the powers of the court will also have to be checked by the government. And therefore, I come to a conclusion by saying that we have waited so long. We have suffered so long, we have been bearing this burden for so long, and now I believe is the right time where collegium should either become more transparent for the general public, or there should come a way in some sort of a legislation, a balanced legislation, which should at least make the appointment of the judges transparent, merit-based, and in a way that you can't consider any such judge or any one of the judge favoring the government or opposing the government. Because voice of one Supreme Court judge is the voice of millions. Yes. We have only 30-35 sitting judges. At best, let us say 40. Yes. Not to be precise with the figure. So those 40 people are representing a democracy of 150 crore people. Official 150 crore. That could be even more. And those 150 crore peoples are coming from multiple faith system, multiple belief system, multiple backgrounds, the economy, the economic statuses are different, the educational statuses are different, the regional statuses are different. And those odd 40 people will decide the fate of all that 150 crores. So there is no doubt about it that public should have absolute faith in the functioning of the office, all the offices under the Supreme Court, and any such appointment that is made every time, it is a subject of great social importance. तो ना सिर्फ इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, इसको बहुत ही गंभीरता से देखने की जरूरत है. अंग्रेजों के बनाए हुए सिस्टम पे हमने अंग्रेजों से तो आजादी पा ली, लेकिन अब एक दूसरा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है जहां भारत को अपनी पहचान के लिए एक संग्राम करने की जरूरत है, जहां हर उस कॉलोनियल लॉ को, उस कॉलोनियल माइंडसेट को 50 डिग्री तापमान में काले कपड़े पहन के कोर्ट में जाने को बदलने की जरूरत है. एक सिस्टम जो कि रैशनैलिटी पे बेस्ड हो, एक सिस्टम जो कि लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड हो, एक सिस्टम जो कि एफिशिएंट हो, एक सिस्टम जो कि पब्लिक कॉन्शियंस को समझ के उन्हें एड कर सके, और ना सिर्फ एक ऐसी संस्था बन के रह जाए जो कि आम नागरिक की क्षमता, पहुंच, समझ, भाषा के आधार पर, पैसे के आधार पर, सामाजिक वर्ग के आधार पर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन ना बन जाए जहां जनमानस पहुंच ही ना पाए. आज भी हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा डालने के लिए लोगों को अपनी जमीनें बेचनी पड़ती है. बहुत सारे लोग हाई कोर्ट के फैसले पे केस को जीता या हारा मान लेते हैं क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकते.
तो justice should not be expensive. And when I say expensive, the first question that will come, and this is the bed of thorns that I have invited for myself, that then why advocates are charging so much? नहीं ऐसा देखो, मैं एक्चुअली है ना, एक क्वेश्चन आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, एक तो सिंपल सा जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, इस स्टेटमेंट के ऊपर मेरे को आपसे एक डिटेल्ड डिस्कशन, क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत एंजॉय कर रहा हूँ आपकी इसको, और उम्मीद करता हूँ, हालांकि जो व्यूअर्स हैं वो इसलिए कम है क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश वाला कंटेंट ज्यादा हो गया, और हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कह रहे हैं साहब हिंदी में समझाओ, अंग्रेजी में समझ में नहीं आ रहा। लेकिन नहीं एक्चुअली वो एक कोई बात नहीं। क्या होता है, आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज है उससे एक लेमन लैंग्वेज में आना मेरे हिसाब से बड़ा चैलेंजिंग होता है, इवन कई बार हमारे लिए भी होता है। इवन इससे अंदाजा लगाइए कि मैं जैसे इंग्लिश मीडियम के बैचेस ले रहा होता हूँ, तो उसी सब्जेक्ट को जब हिंदी मीडियम में कई बार पढ़ाना होता है तो मैं आधे टाइम ये कंफ्यूजन में रहता हूँ कि उस पर्टिकुलर इंग्लिश जो वर्ड है उसकी हिंदी क्या होगी, और उस चीज में स्पिरिट जो है वो पर्टिकुलर टॉपिक की वो गायब हो जाती है। तो इसलिए मैंने बिल्कुल बीच में इसमें टॉपिक नहीं है को डिस्कस मतलब डिस्टर्ब नहीं किया आपको, क्योंकि जिसको समझ में आ रहा है उसको बहुत अच्छे लेवल पर समझ में आ रहा है और कंसिस्टेंटली स्टूडेंट बना हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है, और वैसे भी त्योहार का मौसम है सर, मेरा एक तो क्वेश्चन आपसे यही निकल कर आया, एक जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड और जिस तरीके से प्रोसेस, और दूसरा महंगा, कि जस्टिस इतना कॉस्टली है कि उसका फिर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से एक चीफ जस्टिस रह चुके हैं, वो एक बार रो भी पड़े थे, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हिज नेम, के वो नाम क्या था, कि यार आज एक आम आदमी को जस्टिस के लिए इतना तड़पना पड़ रहा है कि वो उम्मीद भी नहीं कर सकता कि जस्टिस, अगर आपके पास पैसा है तो पैसा नहीं है तो आप जस्टिस ले पाओगे, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ एक बंदा ऐसा जो 17 या 19 साल तक एलिजिडली, हम यही कह सकते हैं एलिजिडली, क्योंकि वो प्रूव नहीं हुआ है, शायद प्रूव हुआ भी है नहीं हुआ, सड़क के ऊपर लोगों को मार देता है, एक काले हिरन को मार देता है, और उसके बाद भी वो 17, 18, 20 साल तक बाहर घूम रहा है, और 20 साल का जो डिसीजन है वो 1.5 घंटे के अंदर हाई कोर्ट के अंदर फाइल भी हो जाता है, उस पर हियरिंग भी हो जाती है, उस पर सारे काम हो जाते हैं, और अब हाई कोर्ट में है, और हाई कोर्ट के अंदर भी अगले 20 साल चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उसकी डेड बॉडी के ऊपर शायद ऐसा कोई डिसीजन दिखाए कि हाँ वो काला हिरन मरा था, उसकी डेड बॉडी को वो आप सजा दे दो। दो तरफ है, और मैं इसी चीज के ऊपर एक लंबा चौड़ा डिस्कशन करना चाहता हूं आपसे, और मेरे हिसाब से अभी हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि पहले ही बहुत लंबा चौड़ा एक अच्छा खासा टाइम हो चुका है साहब। लेकिन आपने कहा दिस टॉपिक विल रिक्वायर एन अनदर डिस्कशन, बट इन वन लाइन इफ आई कैन, अगर मैं सिर्फ रूपरेखा में डालना चाहूं तो I would say justice is not a luxury that can be afforded by everyone today. ये एक ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुविधा है जो जनमानस या आम साधारण नागरिक मेजॉरिटी के रीच में नहीं है, एंड I make this statement with all responsibility because I know कि एक अच्छी सुनवाई के लिए, एक अच्छे वकील के लिए, और उस रेशियो को मेंटेन करने के लिए, मैं बार बार कहता हूं 150 करोड़, सिर्फ वही अच्छी रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल हाई कोर्ट के सामने ले जा पाता है जो उस रिप्रेजेंटेशन को अफोर्ड कर सकता है। एंड देयर वाज कुछ सीनियर, बहुत नोटेड सीनियर लॉयर्स और जूरिस्ट्स की इसके ऊपर मीटिंग है, and I am talking from their memories in the books, you know, the anecdotes जो उन्होंने share करे हैं, senior lawyer like Mr. Nariman, Mr. Fali Nariman, noted jurist, तो उनके कुछ experiences हैं इस चीज को लेके कि how they try to, you know, make a system कि it should become accessible to all, कैसे एक फीस का पैरामीटर तय होना चाहिए। But I would again come back to you by saying that this is an in-depth topic, you know, better suited for some other discussion. तो खैर सर, आज का हमारा जो टॉपिक रहा वो बहुत अच्छे लेवल पर डिस्कशन रहा, हालांकि थोड़ा सा ऑफ द लेवल है, और हर किसी के बस की बात नहीं है इन चीजों को समझ पाना। सॉरी, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स और व्यूअर्स हैं वो गुस्सा भी होंगे कि सर ऐसे कैसे कह रहे हो, लेकिन ये रियलिटी है।
हमने जिस लेवल की इस समय पर डिस्कशन की है वो ज्यादातर लोगों को समझ में ही नहीं आएगी। और बॉटम लाइन ये है, सुप्रीम कोर्ट इज यूजलेस, सुप्रीम कोर्ट इज दिस, सुप्रीम कोर्ट इज दैट, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट अभी तक समझ में ही नहीं आया। और अभी अगर हम सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग घूम रहे होंगे तो आउटकम तो वैसे भी नहीं आने वाला। तो खैर इसी नोट के ऊपर कि भाई अल्टीमेटली बैलेंस ऑफ पावर है, दोनों सुप्रीम कोर्ट में भी या पूरे जुडिशियल सिस्टम में भी एक रिफॉर्म की जरूरत है, कॉलेजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है और गवर्नमेंट की नीयत की जरूरत है। और दोनों में कहीं ना कहीं एक दोनों में कमी है, दोनों को सुधारनी पड़ेगी। बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट की जरूरत है। हाँ, बैलेंसिंग एक्ट की बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर वो बैलेंसिंग हो पाती है तब तो बहुत अच्छा, अगर वो नहीं हो पाती है तो आने वाला समय जो है वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने बिजी शेड्यूल के अंदर सर ने हमारे लिए टाइम निकाला। और दूसरा, अगले टॉपिक के ऊपर अगले डिस्कशन के लिए सर से हम जल्दी ही समय लेंगे। यस सर, कुछ कह रहे थे आप? I would like to congratulate you for the bravery that you have shown to conduct such brave discussions in a time where discussions on YouTube channels are only for masses or to gather views. एक ऐसा डिस्कशन जो कि एक एकेडमिक पॉइंट से करेक्ट हो, जो कि पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट हो, जो कि एग्जामिनेशंस में यूज किया जा सके, जो कि डिटेल्ड हो. It takes a lot of efforts to conduct such brave discussions. I like to congratulate for that, and I am more than happy that you considered me of some worth to bringing me onto such discussions. I will also thank you, thank your viewers to bear with me particularly, हमारे साथ बने रहने के लिए, सुनने रहने के लिए, and whatever their opinions are very much welcome. मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ. I believe in the principle of people having their own voices. That is the beauty of democracy, and I sincerely hope that we do this very often. थैंक यू सर। एक्चुअली हमारा भी फोकस यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए रहता है और ये जो आपने टॉपिक डिस्कस किया है हमारे साथ, ये मेनली इंपॉर्टेंट है जो मेंस आंसर राइटिंग है ना, उसमें जो डायमेंशंस को कवर करेगा। और ऐसे 2-4 टॉपिक्स और लेके आने वाला हूं मैं आपके साथ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।